દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ। ટીજી સોલાર નામની બોગસ કંપની ઊભી કરી ઊંચા ભાડે કાર લઈ જઈ 264 કાર સગે વગે કરી દેનાર ટોળકીના રેકેટનો પર્દાફાશ કરી સુરતની SOG અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ઇકોનોમિક સેલ દ્વારા 200 કાર રિકવર કરાઈ હતી। ટોળકી આંતરરાજ્ય કૌભાંડ આચરતી હોવાનું હાલ સામે આવ્યું છે। સુરતમાંથી ટીજી સોલાર નામની બોગસ કંપની ઊભી કરી ઊંચા ભાડે કાર લઈ જઈ આશરે 264 કાર મેળવીને તે કારોને બારોબાર વેચાણ કે ગીરો આપી ઠગાઈ આચરાઈ હતી। જે મામલે સુરત સહિત અનેક શહેરોમાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી। ટોળકી માસિક 20 થી 50,000 ઊંચું ભાડું આપવાની લોભામણી વાતો કરી કાર માલિકોને વાતોની માયાજાળમાં ફસાવી કારો લઈ જવી વેચી મારવાની સાથે ગીરો પણ મારી દેતી હતી। જે મામલે નોંધાયેલી ફરિયાદોના આધારે સુરત પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી અને સુરતની SOG તથા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ઇકોનોમિક સેલની ટીમ દ્વારા બાતમીના આધારે આ કૌભાંડ આચરનાર ટોળકીનો રીઢો કામરેજ ખાતે રહેતો અને મૂળ બનાસકાંઠાનો કેતુલ પરમારને ઝડપી પાડ્યો હતો। તો ઝડપાયેલા આરોપીની પૂછપરછ કરતા તેને જણાવ્યું હતું કે વોન્ટેડ આરોપીઓ સાથે મળી તેને ષડયંત્ર રચી પોતાની ઓફિસ કામરેજ ટર્નિંગ પોઈન્ટ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ખોલી ત્યાંથી ગાડી માલિકોને ટીજી સોલાર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની જે ભરૂચ ઝઘડિયામાં હોય તેમાં ગાડી મૂકવાનો કોન્ટ્રાક્ટ પોતાને મળેલ હોવાનું જણાવી ગાડી માલિકોને માસિક 25 થી 50,000 સુધીના ઊંચા ભાડાની લાલચ આપી ગાડીઓ મેળવી તે ગાડીઓના ભાડા કરાર બનાવી કારો મહારાષ્ટ્ર જલગાંવ નંદુરબાર ખાતે વેચાણ આપવાની સાથે ગીરો આપી દેતા હતા અને શરૂઆતના 1-2 મહિના સુધી ભાડું ચૂકવી દીધો હતો। જો કે બાદમાં ભાંડું ફૂટી જતા ઓફિસ બંધ કરી ભાગી ગયા હતા। પોલીસે આરોપીની પૂછપરછ કરી મહારાષ્ટ્રના તથા ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાંથી 265માંથી 200 જેટલી કાર રિકવર કરી હતી। સુરત પોલીસે હાલ તો 264માંથી 4.5 કરોડની 200 કાર કબજો કરી લઈ તેઓના માલિકોને વાહનો પરત આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। एक नागरिक अमर भाई वीरा भाई पटेल उन्होंने आके कंप्लेंट किया कि मुझे ऊंचे किराए का लोभ देकर 5 गाड़ियां मुझसे ली गई टीजी सोलार कंपनी के नाम से, जहां से भाड़ा मिलना था, जहां से किराया मिलना था, जबकि टीजी सोलार नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये चीटिंग, ये गुनाह करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है केतुल परमार, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम करता था। और उसने इस तरह से अमर भाई और दूसरे कुछ एक सामान्य लोगों की मदद से कुल 264 गाड़ियां इस तरह से ऊंचे किराए का प्रलोभन देकर ली और उसके बाद उसको धोलका, धंधुका, बोटाद, भावनगर, अहमदाबाद, जामनगर, बारडोली, सूरत, महाराष्ट्र में नंदुरबार वगैरह इन अलग अलग विस्तारों में वो जाके गाड़ियाँ इन्होंने बेची। इन सभी गाड़ियों की कीमत एक आम कोई भी नागरिक के लिए बहुत बड़ी कीमत होती है, क्योंकि किराए पे गाड़ियाँ लगाने के प्रलोभन में सामान्य और गरीब लोगों ने गाड़ियाँ खरीद को इनको दी, तो बहुत लोग इस क्राइम से पीड़ित थे। पुलिस ने अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंसेस सेल, सूरत सिटी, ACP, PI और सुपरवाइजरी अधिकारियों के सतत मेहनत से अभी तक 200 गाड़ियां रिकवर की हैं, जिनकी कीमत करीब 4.5 करोड़ के आसपास होती है। ये गाड़ियां रिकवर करने के बाद, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 22 गाड़ियां मूल मालिकों को वापस दे दी गई हैं। दूसरे 60 मालिकों ने कोर्ट में एप्लीकेशन किया है, जिसको पुलिस तात्कालिक सभी प्रक्रिया पूर्ण करके वो गाड़ियां भी परत कराएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये सभी 264 गाड़ियां रिकवर होंगी और जिस जिस नागरिक ने इस तरह से गाड़ी गंवाई थी उनको उनकी गाड़ियां वापस दिलवाई जाएंगी। अभी तक एक आदमी को अरेस्ट किया गया है, जिस आदमी ने ये पूरा स्कैम किया था। इसके अलावा कुछ और लोगों के नाम हमारे पास हैं, उनको पकड़ने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। लेकिन हमारा प्रथम उद्देश्य ये था कि जो गाड़ियाँ इस तरीके से अलग अलग लोगों से ले ली गई हैं उनको गाड़ियाँ वापस दिलवाई जाएं। गलत तरीके से जो बेच दी गई हैं उन गाड़ियों को रिकवर करने का भगीरथ कार्य पुलिस ने किया है। 200 गाड़ियां जैसे मैंने बताया रिकवर हो गई हैं, बाकी गाड़ियां रिकवर करने का कार्य भी चल रहा है।
कैसे चीटिंग करते थे, कैसे लोगों को उनको ये बताया जाता था कि टीजी सोलार नाम की एक कंपनी है जिसमें आप यदि भाड़े पे गाड़ी देंगे तो हर महीने 25 से 50 हज़ार का भाड़ा आपको मिलेगा। तो ये भाड़ा इतना अट्रैक्टिव लोगों को लगता था कि एक दूसरे से बात करके काफ़ी सारे लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां ले जाके उनको दी। लेकिन ध्यान पे इस तरह से आया कि गाड़ी के जीपीएस की लोकेशन कहीं थी और कंपनी की जो लोकेशन बताई गई थी वो झगड़िया थी। तो गाड़ियां झगड़िया में ना चल के जीपीएस की मदद से पता लगा अलग अलग जगह चल रही हैं। तो इसी की इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से पुलिस ने की और ये गुनाह डिटेक्ट किया है। દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો એસએસકે ન્યૂઝ ચેનલ